What up? What is up? So, I'm really excited to talk to you guys about my journey of IIM Calcutta interview, जो कि almost मेरा 7th interview था this year. And this is Anubhav, by the way, and I have done serial startups right now. That's my work basically. Having done that, an influencer, I've got 10k over, sorry, 12k followers on multiple social media streams, as well as LinkedIn. Almost 600 700 people have following me, and there are a lot of connections. All right, so with that being said, uh, I've been a software engineer from IIT Dhanbad, and then I turned into a businessman. So let me talk to you with that intro done. चल मेरे बारे में बात करते हैं कि ऐप कलकत्ता कैसे किया. तो फॉर्चुनेटली मेरा ऐप कलकत्ता पास पे था, तो उसके लिए मैंने सेपरेट व्लॉग बना रखा है कि कितना खर्चा आया नहीं आया, कहाँ पे मैंने स्टे करा, एंड एवरीथिंग, हाउ वाज द रूम, कॉलेज थोड़ा सा वॉक किया, हाउ व्हाट आई माय टेक ऑन द कॉलेज इज, सब कुछ मैंने फूडिंग एंड ऑल क्या था, एवरीथिंग इनसाइड द कॉलेज मैंने इन डेप्थ दिया है रिव्यू. With that being said, let's talk about the interview, the D-Day, right? इंटरव्यू का क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली आई फेल सिक. वेदर बहुत ख़राब था कोलकाता का, सो आई हैड टू हैव मेडिसिन. डोलो लिया almost half an hour before the interview. I was damn shivering. Had not a good experience with relation to my health that day. So uh, I will talk about whether we could have bags and mobile, yeah, bags and mobiles were allowed in the waiting until in the waiting room. से हर टाइप का था. और जस्ट बिसाइड इंटरव्यू का जो रूम था उसके जस्ट बगल में रूम था ये. तो इंटरव्यू मेरी हुई थी MDC में, ग्राउंड फ्लोर. I got to sneeze, I guess. Alright, so the college experience was really good. Bags and mobiles वहीं तक रखना था, and then we had to take the folder, फाइल का फोल्डर जो था वो फोल्डर ले करके हम लोग इंटरव्यू के पास जा रहे थे. लेकिन उससे पहले हमारा वैट हुआ. वैट में मेरा टॉपिक था वुमेन इन स्पोर्ट्स. They are getting women. I'm getting more interested towards sports in India, particularly in India, and I've written many points. Like I would rather open it because I don't want to. Just say, I don't want to mess it. All right. So women in interested in sports, which are male dominated as such. So how what are the reasons behind women getting interested into uh, sports? All right, so that was that general category के लिए 25 minutes, PWD के लिए almost 35 minutes के लिए था. सिंगल A4 सीट दिया जाता है, फ्रंट एंड बैक लिखना होता है लाइन के अंदर. नीचे में दिया होता है कि नहीं लिखना है, वहाँ पर रफ करने का इसमें था, लेकिन आई एम कोजी कोड में नहीं था रफ करने का सीट. उसी पेज में थोड़ा सा रफ करने का, एंड देन ऊपर में नाम, रोल नंबर और वगैरह लिखना होता है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें भी लगभग हर आदमी का 10 मिनट ऑन एवरेज लग जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में. सब चीज़ दिखाना पड़ता है. अगर किसी ने गलत भरा है तो उसको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है. वो स्टेटमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है, या वो जो आपने लिख रखा है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ता है. दे गिव अ चांस कि आपके पास है कहीं और है तो मेल करके या किसी तरह दिखाइए या सॉफ्ट कॉपी दिखाइए. देन ओनली दे मार्क अ टिक मार्क और दे edit with the
इस बार तो अच्छा था कि हम लोग को ज़ेरॉक्स लेके आना था सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो उसी में टिक मार्क कर रहे थे या फिर क्रॉस मार्क कर रहे थे। तो मेरा थर्ड था पैनल 4 में आई वॉज थर्ड, एंड 3 panelists were there, all 3 male, right? बैग्स मोबाइल्स अलाउड थे until the seminar hall, उसके बाद इंटरव्यू में अलाउ नहीं था। बैग में रख देना होता था अपने फ़ोन को, और फोल्डर ले रखे आप इंटरव्यू रूम में चल जाते हो। Percentile, belonging from a category, so I have almost 70 percentile this year in 2023. Then the interview went from 12:30 to 4 p.m. दोपहर में स्टार्ट हुआ, ऑल द फर्स्ट शिफ्ट में नहीं था मेरा, सेकंड शिफ्ट में था। Lunch wasn't provided, but yeah, snacks was provided for free to every candidate, so that was really nice। पेरेंट्स को लंच फ्री मिल रहा था। बाय द बाय टाइम मेरा हुआ 3 साढ़े 3 बजे, तब तक लंच खत्म हो चुकी थी, सिर्फ स्नैक्स कर पाया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वैट के बीच बाद इंटरव्यू से पहले आपको स्नैक्स मिल जाता है, केक्स, मफिन्स, काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे आइटम्स थे। बट आई थिंक इट वॉज आई एम आई एम कोजी कोर दैट चिंदी के किया था भाई, एक स्नैक्स नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया उन्होंने, तो पानी दिया था बट स्नैक्स वाजंट प्रोवाइड इन आई एम कोजी कोर। ऑलराइट, गैप बिटवीन इंटरव्यूज़ था, मतलब कोई गया उसके बाद फिर 2-3 मिनट के बाद गैप होता है, तो सारे पैनलिस्ट को शायद प्रोफाइल पढ़े थे कैंडिडेट का। दैट वाज रियली नाइस। आई वाज आस्क्ड अबाउट आर यू कॉन्फिडेंट इन मैथमेटिक्स, as finance and statistics are very heavy in MBAs, and so has to be, and more so in IIM Calcutta, so quants के ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। So I told I'm not that bad, I'm good. So I replied, uh, I'm I'm pretty much ठीक ठाक in mathematics. All right, so you don't have to boast. All that was me, like keeping myself down to earth, right? Then the first question was Mure. He told like what is they got to know that I am from. They didn't ask introduce yourself or tell me about yourself, anything like that. सब कुछ पढ़ रखा था उन्होंने। They started asking. Same was the case in Indore and Kozhikode, right? So I was the asked what is the current affairs in news related to computer science these days. I I wasn't aware like what specific thing he wanted to ask. He told about someone's death, and then literally I didn't know that. I didn't read that news, so apologetically I answered that, sir, I think I have missed news. And then he told like it was Murray. Why was Murray famous for? So Murray's law पूछा गया। Murray's law जो कि I could not recall back then। मुझे याद था कि Murray I had read it for काउंटिंग, जो इनिशियली काउंटिंग कैलकुलेटर बन रहा था, तो फिर वो एक Murray को जानता था मैं। तो बट दिस Murray इज इंटेल का फाउंडर, एंड मूरे लॉ जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोसेसर्स एक कंप्यूटर में, उसका एक ग्राफ की ज़रूरत है इसमें, तो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने लगे हैं ना, तो रीड अबाउट इट अगर आपका इंटरव्यू बचा है तो। देन there were 2 guys only who asked me, third guy didn't ask at all। I think third guy didn't belong from was not the faculty of that IIM Calcutta, maybe in maybe alumni or
also. So the second guy asked, why losses startup make losses and still have high valuation. So basically, I had answered because I don't know. मैंने actually मैं आंसर क्या करा था? Yeah, it was about to evade some, so because to evade taxes, some because they're always expanding. So जितनी भी प्रॉफिट्स आती है उससे ज़्यादा एक्सपैंड करता है इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर के, तो दे at the end of the day the balance sheet becomes negative, and thus the profitability goes to zero or less than zero. So small players compete कैसे करें giants से? That was biggest one of the most discussed question apart from Mure. That was, I told like it is not about being the first, but being the fastest. Like Google wasn't the first to have search engine, but and page ranking, but the most important thing was Google was fast runner, and even today the same question was asked, and I'm I am Nagpur. I just have done my I am Nagpur online interview. This was online, but I am Calcutta indoor Kozhikode was offline. So small players compete to giants would be by association, associating with a small and making it a small giant. Make it you could say, and that's how we happen to talk about my losses in the last 15 days because of this Geo Mart coming in picture in my hometown where I operate my business. So the panelists asked, so is it the reason you want to do an MBA? I said no, because long back I had started preparing for CAT, and although it was part time, but I was sure to get into an MBA. Then I gave my own reasons why I want to do an MBA, right? Okay. Why won't you choose IIM Bangalore over IIM Calcutta? If I happen to have IIM Bangalore as well, so why not IIM choose IIM Bangalore over IIM Calcutta? I give the reason because of the traffic, and second CEMS जो एक प्रोग्राम है जिसमें कि इंटरनेशनल के लिए जाते हैं लोग, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाते हैं लोग विद टॉप 30 कॉलेजेस ऑफ फॉर MBA अराउंड द ग्लोब, यूरोप जाते हैं लोग. I think top 40 students of a batch can go abroad for studies. So वो you could mention in your that was that college for exchange where you went, that get added to your degree when you get the degree of MBA, when you complete the degree. So startup revenue क्या होती है? Startup revenue मेरी क्या है, को फाउंडर्स कौन है, नहीं है, फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व है क्या, तुमने बताया नहीं, एंड ऑल स्नैक्स था, and as I told, unlike cozy code, what all calls I have, ये क्वेश्चन पूछा गया. I told like I am as my best call, and then I was asked which all calls I have. I mentioned that all the calls I have got, and then after we had to sign our attendance inside the interview room, and then we got to leave. That was pretty nice. The experience was really nice. So a big thumbs up for Calcutta. Staffs are really supportive, and
क्वांट मेरे पैनलिस्ट में किसी को पूछा ही नहीं जा रहा था, बिकॉज लाइक गर्ल वेंट बिफोर मी, आई वाज अ थर्ड इन द पैनलिस्ट. सो सी टोल्ड लाइक क्वांट पूछा ही नहीं गया, एंड सी वेंट आउट विद इन 7 minutes. So mine went for 10 to 12 minutes. Yeah. All right, guys. See you soon. I think I've answered most of it. Current affairs तो बता ही दिया. यार पीजी से पूछा गया कि साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी का मेरा फर्स्ट ईयर ही हुआ था. I haven't completed the second year, so I didn't have a degree. So that PG was not included in IIM Calcutta, well, thing. And yeah, that was pretty much it. So prepare well if you have interview in future. All right, see you soon. And you could, if you have already done the IIM Calcutta interview, then or any other college का interview, then transcript आप comment कर सकते हो below this video. All right, see you soon, guys. And next, I would be having an Nagpur ka interview ka experience outside.